Respected elders, very dear sisters and brothers, yesterday what was conveyed to many of us, it sounded very demotivating. इतने सालों से हम कर रहे हैं और अभी भी योग पुरुष योगेंद्र श्री कृष्ण भगवान के साथ सगाई भी नहीं हुई, कनेक्शन भी नहीं हुआ। बहुत लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे कि सेंट्रल रीजन पाए, बहुत लोग पाने भी लगे हैं, लेकिन जो खास चीज है योगेश्वर के साथ हमारा नाता हो जाए, वो भी उन्होंने बताया। वो दिन, वो दिवस दूर नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया, आपको ध्यान लगे या न लगे, सुबह 1 घंटा एक समय पे हिले बिना आपने नक्की कर दिया 6 बजे बैठना है, 6 बजे बैठो। एक तरह की डिसिप्लिन ला दो। 6:05 will not do, 5:55 will not do, 6 sharp। 1 घंटा मन लगे या न लगे, हैबिट कर लो। देखो 1 साल में क्या होता है। बाद में मेडिटेशन जैसे 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 आगे बढ़ता रहेगा, हायर सुपर कॉन्शियसनेस will begin to descend at a very specific time. Most of you are fully aware of establishing two things which Babaji Maharaj has been talking time and again. To establish a biological clock in our system means to train our system to do certain things at a specific hour. There should not be changes. Second thing is automatism. You should establish high level of automatism in your system. Means automatically, as and when you want to dive and touch that superconsciousness at will, we should be able to do that. So establish, follow the first maxim of Sahaj Marg. At a fixed time, preferably before sunrise. सनराइज के बारे में भी बाबूजी क्यों कहा है, एक उदाहरण देते हैं। जैसे हम नदी में तैरते हैं तो विद द फ्लो ऑफ द रिवर इट्स इजी टू स्विम। उसके अगेंस्ट में हम तैरने की कोशिश करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। Flow is not cooperating when we swim against it. Circadian rhythm, our intake and our inhalation and exhalation through this nostril or that nostril is very well regulated by sun and moon cycle.
When the right nostril or Surya Nadi is predominating, we release the energy. When Chandra Nadi is dominating, we absorb energy. Early morning hours, before the sunrise, Chandra Nadi is active and the flow of energy, the cosmic energy is entering our system. Along with that, when our pranahuti also is rushing towards the craving hearts, the flow only intensifies. This is the logic. Similarly, when Surya Nadi is still active before the sunset, energy is outflowing. That is when we try to emit or emit the flow of the smoke or the vapor from the backside. It goes with the flow. It only intensifies. You try to attempt to do this cleaning late in the night, your consciousness also doesn't cooperate because often you are so sleepy. So kindly please bear this in mind. The practice as prescribed should be followed. Of course, कभी 5:30 कर लिया, कभी 7:30 कर लिया, कभी नहीं भी किया, कभी 12 बजे कर लिया, प्राणाहुति तो हमको मिलेगी ही, लेकिन कुछ परफेक्शन में कमी है। बाबूजी कहते हैं कि छोटे छोटे काम में भी परफेक्शन होना चाहिए, नहीं तो असंतोष पूरी जिंदगी रहेगा। ब्रश करना है, मुंह धोना है, स्नान करना है, प्राणायाम करना है, आसन करना है, ध्यान करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, खाना भी है, बर्तन भी साफ करना है। परफेक्शन होना चाहिए। यदि छोटी छोटी चीज़ों में परफेक्शन नहीं होगा तो आध्यात्मिकता में जो हम कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, उसको होल्ड करने में, उसको डाइजेस्ट करने में और फ्रॉम बिकमिंग टू बीइंग जब हो जाता है, साधना करते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभव किया उससे भी हम थक जाते हैं। वी गेट टायर्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग सो मेनी थिंग्स एवरी डे। अ टाइम कम्स, चेष्टा हो जाती है दिल में कि आज कुछ बनना है। बनने के बाद, बिकमिंग के बाद, यू एंटर इन द स्टेट ऑफ बीइंग एफर्टलेसली। बट हमारा बिगिनिंग्स ढंग से होना है। ऐसे ये जो हमारी प्रैक्टिस है, जैसे प्रिस्क्राइब किया है वैसे ही करो आप। बाद में कभी कभी ऐसा होता है, हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, ढंग से नहीं पढ़ा, हमको पता चल जाता है कि हमने ठीक से नहीं पढ़ा। एग्जाम के लिए टेंशन भी हो जाता है, कई लोग फेल भी हो जाते हैं। हम अपने टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकेंगे कि आपने हमको नहीं सिखाया। आपका कोई हक नहीं है टीचर को ब्लेम करने का। आप सब पढ़े, ढंग से पढ़े, ढंग से प्रैक्टिस करें तो मालिक को कह सकते हैं, अपने गुरुदेव को कह सकते हैं कि साहब आपने जैसे बताया वैसे ध्यान भी किया, सतत स्मरण भी किया, सफाई भी की, प्रार्थना भी की, लेकिन
हम वैसे के वैसे हैं, ये समय कभी भी नहीं आ सकता। फरियाद करने का मौका कभी भी नहीं आ सकेगा जब हम अपनी जिम्मेदारी बनाए रखते हैं। If we remain irresponsible, then how can we complain to God? चुप हो जाना पड़ता है, मैंने नहीं किया इसलिए नहीं हुआ, ईश्वर से फरियाद नहीं कर सकते हम। लेकिन सब कुछ किया विद द राइट एटीट्यूड ऑल्सो, तो प्रभु को पकड़ सकते हैं कि हे प्रभु तुम कैसे हो, मैंने सब कुछ किया, सही भक्ति से किया, फिर भी लेकिन मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि ऐसा समय कभी नहीं आ सकता। जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी से कभी चूक नहीं सकते हैं। अगेन रिमाइंडिंग बाबूजी स्टेटमेंट, if Abhyasi walks one step towards me, I walk hundreds of steps towards the Abhyasi. And Chariji कहते थे कि what is the difference between one step of an Abhyasi and one step of a guru? Our steps are 2 feet. His step is infinity. He may not even have to take 100 steps. With absolute bhakti, we have to approach the master. जैसे मैंने कल बताया कि जिसके दिल में खटक है वही अटक रहा है। हम इंसान हैं, मानस है, मन भी है, इसलिए कुछ न कुछ धोखा हो जाता है। ठीक है, डाउट्स हो जाती है, शंका हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, वो भी ठीक है, लेकिन कब तक रखोगे ये जहर अपने हृदय में, कब तक रखोगे? वही हमें मदद कर सकते हैं। प्रार्थना भी करते हैं ना कि हे मालिक, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। उनसे ही प्रार्थना करने के प्रभु हेल्प अस, वी आर नॉट एबल टू मेक एडवांसमेंट, प्लीज हेल्प अस। So the state of vacuity, state of insignificance, subdued state, always remain low in your heart. I don't mean depressed, receptive. Even in the atmosphere, आपने कल देखा, it was very windy. बारिश ठीक हुई, पौधे जो धूल होती है वो भी साफ हो गई। यदि हवा में, ये एटमॉस्फेयर में वैक्यूम नहीं होता तो पवन कैसे आएगा? हाउ विल द विंड एंटर द एटमॉस्फेयर? इट कैन नॉट। You have to have low pressure zones so that the wind can flow. The grace from heavens, from the brighter world, can only descend only when this heart has attained some level of vacuity, some level of low pressure, some level of desirelessness. It must be a craving heart, crying heart, with lots of love, waiting for the Lord's grace to descend. But when we are so busy with our desires, and desires fueled by our ego, अपने ही लोग दुश्मन हो जाते हैं। बीबी भी दुश्मन जैसी लगेगी, जैन कब लगेगी? डिजायर्स ओवरटेक्स, अहंकार ओवरटेक्स, हस्बैंड भी दुश्मन जैसा लगेगा, माँ बाप भी ऐसे लगेंगे। तो काहे के लिए इतनी डिजायर्स एंड ईगो
thriving all the time, that I am better than someone. Always remember, there is nothing wrong in thinking, as Babuji says, that person in front or I am better than everybody else और आई एम सो गुड, उसमें कुछ खराबी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन हमेशा ऐसा सोचो कि मेरे सामने जो खड़ा है तो मुझसे भी अच्छा है। पर्सन इन फ्रंट इज बेटर देन मी, देन सम रिलेशनशिप कैन बी बिल्ट अप। खड़े हो गए कि आई एम बेटर देन यू तो बात खत्म हो गई, व्हाई विल ही टॉक टू यू। So it is about practice. Lord Krishna says, even if you don't like to meditate, fix your time and stick to it. Second and third things which he said, I will share with you later. Thank you.